Dear children, the objective of this video is to know the hard realities of soldiers' life. Their sacrifice to this holy land is uncomparable and unimaginable. They work day and night to keep us safe and happy. They leave their family behind to protect our land. They do not have the fear of losing their lives. They'll be ever ready to die for the sake of the nation. Now, we have tried to show their boundless efforts in this short audio visual. Please do watch it. India has a rich cultural heritage and is one of the world's oldest civilizations. It is an all embracing confluence of religions, traditions, and customs. The geographic terrain of India is rich and diverse, filled with lush green forest, scenic falls, majestic mountain peaks, mosaic grasslands, tropical beaches, and vast stretches of wilderness. This vast India is guarded and protected by our soldiers in all the directions. Before independence, the Indian Army was an important part of the British Empire's forces. The condition of Indian soldiers in the British Army was very pathetic. They get lower wages as compared to the British soldiers. After independence, many changes were made in the Indian armed forces. Now, the President of India is the Supreme Commander of the Armed Forces. These were the presidents who once became the Supreme Commanders of the Armed Forces. The present President of India is Draupadi Murmu, who is the Supreme Commander of the Armed Forces. The Indian Armed Forces comprise of three divisions: Indian Army, Indian Navy, and the Indian Air Force. Now, let us see the toughest Indian military training. इसमें 24 से बार बार रूटीन एक्सरसाइजेस कराई जाएंगी जब तक कि कोई हार नहीं मान लेता। 36 आवर्स के अंदर इनको सोने नहीं दिया जाता है। अब पूरा फिजिकली और मेंटली हर चीज का स्ट्रेस इनके ऊपर डाला जाता है। इसके दो मकसद हैं। एक तो हमें पता चलता है कि उसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, दूसरा इंडिविजुअल को ये पता चल जाता है कि मैं यहाँ तक स्ट्रेस ले सकता हूँ। 30 किलो के बैकपैक्स या बैटल लोड्स प्रोबेशनर्स के लिए तैयार कर दिए गए हैं। उस समय आपके साथ एक ट्रेनर नॉन पैरा वॉलंटियर फॉर्म लेकर चलेगा और वो आपको बार बार उकसाएगा कि आप ये ट्रेनिंग छोड़कर अपनी रेजिमेंट में वापस चले जाएं। जिन लोगों को लगता है कि ये बेहद मुश्किल है, तो उन लोगों को अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अगले 2 घंटों तक उन्हें पहाड़ी पर खड़ी चढ़ाई करनी होगी। पहाड़ी पर भारी भरकम वजन के साथ 10 किलोमीटर स्पीड मार्च काफी स्लो हो जाता है। फिनिश लाइन तक पहुंचने में दिन निकल आया है। अब ये लोग अपने बडीज को नए नजरिए से देखने लगे हैं। इन्हें अपनी दोस्ती की मजबूती का एहसास कराया जाएगा, लेकिन इन्हें स्पेशल फोर्सेस के उसूल पर टिके रहना होगा। अपने साथी को कभी पीछे नहीं छोड़ना। ये 5वां घंटा है और जो वजन सहन करने लायक नहीं लग रहा, उसमें असल में वो सब कुछ है जो उन्हें मिशन के लिए चाहिए। ये वजन अभी और भारी होने वाला है। अब है वेट शिफ्टिंग। इसमें 1.18 किलोमीटर सर्किट के 3 राउंड लगाने होंगे। हर प्रोबेशनर अपना 30 किलो का बैटल लोड और हथियार लेकर चलता है
और साथ में हर राउंड के लिए और ज्यादा वजन। पहले राउंड में 20-20 लीटर के 2 जेरी कैम्स, दूसरे राउंड में 60 से 85 किलो के ट्रक के टायर, और तीसरे राउंड में वुडन लॉग्स जिनका वजन 30 से 80 किलो तक हो सकता है। क्या वो जवान जो एक एसएफ या कमांडो बनने जा रहा है, क्या उसके अंदर इतना सहन शक्ति का मादा है? इन प्रोबीज को एनर्जी और पक्के इरादे के नए तरीकों को ढूंढना होगा। हर राउंड को पूरा करने के लिए इनके पास सिर्फ 1 घंटे का ही वक्त है। इतना वेट उठा के चल रहे हैं, इतना तो मेरा खुद का वेट नहीं है जितना ये उठा रहे हैं। ज्यादा लंबा ब्रेक लेने से उनके आगे बढ़ने की चाह खत्म हो सकती है। ज्यादा तेज चलने से उनके शरीर जवाब दे सकते हैं। टायरों को संभालना आसान नहीं है। कुछ के लिए ये वेट लिफ्टिंग है और कुछ के लिए ये गले पड़ी मुसीबत से कम नहीं। लेकिन नीचे रखने से पहले उन्हें अच्छी तरह सोचना पड़ेगा। टायर ले जाते वक्त क्या बहुत मुश्किल लगा, वो तो पूरा हार्ड था। 1-2 बार तो मैंने खड़ा भी होकर मैंने बहुत सोचा कि छोड़ दूं। ड्यूरिंग स्ट्रेस उसका विल पावर देखते हैं कि कितनी कोशिश कर रहा है। लॉन्ग्स ने कुछ प्रोबीज के घुटने टिकवा दिए। India waged many wars against Pakistan. Among them, Kargil War of 1999 is very important. In this war, India regains the possession of Kargil. So, to commemorate the emphatic victory of the Kargil War, every year we celebrate Kargil Vijay Divas on July 26th. Now let us see the Indian Armed Forces in the toughest working places. Indian Army troops have to guard in the snow-clad regions, that is especially in the Siachen Glacier, which is considered as one of the hardest areas on Earth. The average winter snowfall in this region exceeds 1000 cm and temperatures can dip to as low as -50 degrees Celsius. Many soldiers lose their life because of this harsh weather conditions. Not only in the cold regions, they have to guard in Rajasthan amidst the extremely hot weather conditions. There will be dust storms, sandstorms, and the blizzarding heat. We call our soldiers as real heroes as they have to be prepared for everything from bright sunshine to snow showers and from hilly region to the sea. We do see a lot of women working in the armed forces showing their valor and courage. Indian soldiers help the people during the natural calamities also. During natural calamities, the Indian Army conducts humanitarian rescue operation to save many people's lives. They help the needy people in all the possible ways without caring their lives. They evacuate people to the safest places. They have laid down to make bridges so that people can move to the other side. Now, let's watch how our soldiers help us during the time of natural calamities. क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर अधूरी रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा तू ही सहारा, तू जग सारा तू ही हमारा सूरज
तू ही तारा, जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। The next is about Mumbai attacks. You all have heard of the Taj attack which took place in Mumbai. The 2008 Mumbai attacks were a series of terrorist attacks that took place in November 2008 when 10 members of Lashkar-e-Taiba, an Islamist terrorist organization from Pakistan, carried out 12 coordinated shooting and bombing attacks lasting for 4 days across Mumbai. A total of 170 people died, including 9 attackers, and more than 300 were wounded. Our real heroes, that is, our commandos, gunned down those 9 terrorists, and one was caught and sentenced to death. In this incident, we have to remember the army officers and the Punni Krishnan who had a major role to play in protecting people and killing the terrorists. The Pulwama attack, which occurred on 14 February 2019, nearly 40 CRPF personnel were killed by the suicide bomber attack. The impact of war is not limited to the battlefield. The families of soldiers also make great sacrifices when one of their family members is engaged in combat. Some mother will be waiting for her son, wife for husband, children for father, sister for brother. Just see how the family members miss their loved ones and see their endless and boundless grief and sorrow in this video, children. अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी
रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। Some real heroes are our parents. Ramachandra MR, parent of Kushad and Manvant, now he is serving in Kashmir. Dharma Prakash, ex-student of PPEC, parent of Chirant D. Gowda, now he is serving in Jammu. Mohan Kumar, parent of Sannidhi Mohan, he is an ex-serviceman. Dinesh ST, parent of Disha, now he is working in Chhattisgarh. Nagendra, ex-serviceman, parent of Purjit. Srinivas RK, ex-serviceman, parent of Hitashri. Raghavendra, ex-serviceman, parent of Gagan. Prasad, ex-serviceman, husband of Pushpalata ma'am. Kumar, husband of Pavitra ma'am, now he is working in Uttarakhand. Dear children, you have seen the difficulties which our soldiers undergo in their toughest working places. Let's salute our soldiers who work day and night selflessly and make us live peacefully in this country. They really are the legends who never die. Dear children, we should say proudly that we are all Indians. And of course, we are all Indians first and then comes other things. We should never ever let our soldiers' efforts simply go waste. So, let's move hand in hand for India's progress. Jai Hind.